Hi everyone, my name is Nikhil and I'm working as senior data science consultant with Croma campus from last 4 years. In this particular video, we are going to discuss about machine learning, its different aspects, that how machine learning is going to impact our daily life, and we will also be discussing about the main difference between machine learning, data science, deep learning, and AI. So for this session, I will be your tutor. Welcome you to the demonstration video of machine learning. I'll start with a very beautiful quote of Nick Bostrom that machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. So, with this quote or with these words, you can easily imagine how machine learning is going to affect our daily lives, right? So, with this, let us start with understanding what machine learning is and what are the various aspects related to machine learning, what are the various terms and terminologies related to machine learning. Yeah, let us start. First of all, what is machine learning? This is a very big question and this needs to be understood very clearly, right? Now, let me just rephrase this. It is a subcategory of artificial intelligence that refers to the process by which computers develop pattern recognition or the ability to continuously learn from and make prediction based on data, then make adjustments without being specifically programmed to do so. Now, this is what machine learning is. मशीन लर्निंग को हम कैसे समझ सकते हैं? आई एम गिविंग यू अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल. Let us say we do have a newly born baby with us, right? हम सबको पता है कि वो जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो 10 मंथ्स और 12 मंथ्स के बाद ही कुछ बोलना शुरू करेगा, राइट? आफ्टर 3 to 4 months ऑफ हिज और हर बर्थ उसे चीज़ें समझ आने लगती हैं, राइट? 3 महीने 2 महीने तक तो उसे पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, राइट? After that period, after 3 to 4 months, he starts to understand, or the baby starts to understand, okay, this is someone जो कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, he is the one or she is the one who is going to solve my problem. मुझे भूख लग रही है तो this is the one who is going to feed me, right? मुझे कोई दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे वो सिर्फ ऐसे पहचानते कि ये जो इंडिविजुअल है ये मेरे पास आएगा और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट? ये 3-4 महीने का उसका जो आउटपुट है, राइट? आफ्टर दैट 3-4 महीने के बाद नेक्स्ट 5 to 6 months उसे सराउंडिंग्स की जो नॉइज है, जो भी स्पेसिफिक वॉइसेस हैं, ठीक है, उसे पहचानने में लग जाता है. ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये किस चीज़ की आवाज़ है. आपने बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम कोई साउंड सुनता है, थोड़ी सी लाउड साउंड भी सुनता है तो वो डर जाता है एंड दैट बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ सुनी नहीं है, राइट? तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आफ्टर 10 to 12 months वो कुछ बोलने लगता है, राइट? और वो भी क्लियरली नहीं, कुछ कुछ बोलने लगता है. वन थिंग इज दैट इन दीज 9 to 10 months क्या हो रहा है, वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, राइट? उसका ब्रेन जो है वो डेटा कलेक्ट करते जा रहा है. ओके, दिस इज द वन थिंग विच आई सॉ येस्टरडे, दिस वाज द वन थिंग विच आई सॉ इन मॉर्निंग, राइट? ये मैंने मॉर्निंग में देखा था, इसको देखा था, जब मुझे भूख लगी थी तो यही इंडिविजुअल ने मुझे फीड किया था, राइट? सो इस तरह की चीज़ों को गैदर करते 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 फिर वो पहचानने लगता है कि दीज आर माई डियर वंस, राइट? यही लोग हैं जो मुझे हेल्प करेंगे, राइट? तो आफ्टर दैट जब उसकी सेंसेस भी डेवलप हो जाती हैं, फिर वो सीखता है कि हाउ द पीपल अराउंड हिम और हर दे आर यू कैन से प्रोनाउंसिंग दी थिंग्स. वो कैसे बोल रहे हैं, क्या एक्सेंट है, वही एक्सेंट वो कैच करता है, राइट? आपने देखा कि जो पेरेंट्स का एक्सेंट होता है वही बच्चे में आता है, राइट? वो कैसे आता है, इसी तरह से आता है, वो देख देख के सीखता है. तो मशीन लर्निंग भी सेम कॉन्सेप्ट है. जैसे मशीन लर्निंग अगर हम इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो पैटर्न रिकग्निशन डेवलप करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि जो बेबी है वो पैटर्न देखता है, ओके इसी को देखा था पहले, इसी से यही मेरे पास आया था, इसी ने मेरे को फीड किया था एंड ऑल.
राइट, और एबिलिटी टू कॉन्टिन्यू, वहीं से वो सीख रहा है कि दिस इज माई मदर और दिस इज माई फादर, राइट। उसको ये नहीं पता होता कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, बट उसको पता होता है कि दिस इज समवन जो कि मुझे डियर है, राइट। देन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रिएक्ट करता है। सेम मशीन कैसे सीखेगी, मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन को सिखाना, राइट। तो आप बहुत सारा डेटा लोगे, वो मशीन में फीड करोगे, मशीन में स्टोर करोगे, एंड बेस्ड अपॉन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिससे वो पैटर्न्स डेवलप करेगा, वहीं से मशीन आपका लर्न करेगी। दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज, राइट। नाउ if this is machine learning, there are number of terms which are associated with it or which surrounds machine learning, जैसे data science है, machine learning itself है, deep learning है, and artificial intelligence. Now we need to very clearly segregate all these things, right? अब इनको लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, डीएस को मशीन लर्निंग बोल दिया, मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग बोल दिया, डीप लर्निंग को यही बोल दिया, डीएस को यही बोल दिया। दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। So in this diagram you can see that data science is there with all the three other fields. For example, data science deep learning में भी है, data science machine learning में भी है, data science AI में भी। Now what is data science? We'll understand all these things. You can see data science produces insights. आप बहुत सारा डेटा लोगे, ठीक है, उससे कुछ इन्फ्रेंसेस गेट करोगे, उससे कुछ इनसाइट्स गेट करोगे, ओके ये डेटा हमें ये शो कर रहा है, राइट। वो कैसे, जब सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा, लेट अस से आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के इंडिविजुअल्स में, राइट। व्हाई इज दैट हैपनिंग, किनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, फीमेल या मेल, किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, 21 to 30, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स और एडल्ट्स, राइट। सो इस तरह की सारी चीज़ें अगर मुझे डिस्कस करनी तो मुझे डेटा लेना पड़ेगा, उस डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल जस्ट गेट ओके दीज आर द पीपल हु आर गेटिंग मोर इफेक्टेड, राइट। इस एज ग्रुप के इफेक्ट हो रहे हैं, इस जेंडर के इफेक्ट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन के इफेक्ट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो उस केस में सपोज आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट की होगी इस रीजन के हो रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा वहाँ पे सॉइल में है कि वाटर में है कि एयर में, वेयर इट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डेटा साइंस हमें ये इंसाइट्स देता है, राइट। मशीन लर्निंग प्रोड्यूसेस प्रेडिक्शंस। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम आगे डिस्कस करें तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, मशीन लर्निंग हमें ये बताएगा कि आने वाले 5 साल में वहाँ पे वो जो कैंसर के पेशेंट्स है वो इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, फीमेल में इंक्रीज करेगा ज़्यादा कि मेल में इंक्रीज करेगा, चिल्ड्रन में इंक्रीज करेगा कि एडल्ट में इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूसेस एक्शंस, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करेगा कि हमें करना क्या है, राइट। if you are going to feed that data to some artificially intelligent system, artificially intelligent machine, तो वो आपको बताएगा कि हमें इस चीज को अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। और इसमें अब एक हमने चीज अभी डिस्कस नहीं किया, दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, और दोबारा हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, एंड आई विल डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। So here it is what data science gives us. It gives us statistical inference, stats, data visualization. जब आप charts को you just import, I mean to say visualize the data with the help of charts. आप charts plot करते हो, line chart है, bar chart है, number of graphs are there, map is there, donut chart is, pie chart is there. Experiment design, you just do the experiment and design it on the basis of data, and you also increase your domain knowledge. तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वो data science provide करता है, right? Then yes, now we are going to discuss machine learning, and here I am again going to describe it in the words of one of the pioneers of machine learning, which is Arthur Samuel, and how he has described it as a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed, right? You are not going to program them, you're just going to make them learn on the basis of some data using some machine learning algorithms, right? Now here is an example in which I am seeing that input is some set of fruits. There is banana, there is orange, there is apple, right? Next step, what it is, feature extraction. What does that mean? Feature extraction means you're going to extract the features of banana, orange, apple or other fruits, whatever are there.
ऑब्वियसली अगर हम बनाना की फीचर्स देखेंगे तो वो अलग होंगे, ऑरेंज के अलग होंगे, एप्पल के अलग होंगे। मतलब फीचर्स इज लाइक कलर, टेस्ट, शेप। टेस्ट तो चलो हम इसमें नहीं बोल सकते, सो वी कैन गो विद द शेप एंड यू कैन से कलर ऑल्सो, राइट, बिकॉज बनाना जो है वो कभी भी रेड नहीं होने लगा, राइट, या ऑरेंज नहीं होने वाला, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू extract the features in second step. This is what machine learning is. After that we are going to classify them on the basis of features we have extracted in the previous step. जो पिछले स्टेप में हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये बनाना है, ये एप्पल है, ये, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट दी आउट। So this is what machine learning is. You are going to make the machine learn कि वो आपको बताएगी कि ये बनाना है, ये ऑरेंज है और ये है, right? So this is what machine learning is. Now what is deep learning? Correct. अब यहाँ पे आपने मशीन लर्निंग में देखा कि हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन डीप लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं? डीएल मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल क्या होता है? वी आर प्रोवाइडिंग देम अ नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस हम देते हैं। डीप लर्निंग वैसे भी हम यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। और ऑब्वियसली इन डीएल ऑल्सो, डीप लर्निंग में हमारे पास जो कंप्यूटेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं कि आपको हाई एंड सिस्टम्स चाहिए होते हैं फॉर वर्किंग ऑन सम डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज हियर वी यूज न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? जस्ट दोज नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, एंड ईच न्यूरॉन is connected to around 10,000 other neurons. That is how information travel or signal travel in human brain is so fast, right? तो उसी बेसिस पे हम 10,000 तो नहीं, like 100, 200 इतनी लेयर्स का कोई डीप लर्निंग एल्गोरिदम बनाएंगे और उसी के बेसिस पे हम जो है मशीन को लर्न करवाएंगे, राइट। इसमें हम फीचर एक्सट्रैक्शन और जो क्लासिफिकेशन है वो सब लेयर्स में होता है इन न्यूरल नेटवर्क, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सेपरेट फीचर्स टू द मशीन, बट दैट विल ऑल बी डन बाय द दैट मॉडल, राइट। देन कम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही हम सेट ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं, अब उनको लेबल किया, राइट। And on the basis of the label, this robot on your screen which you are getting, this robot is going to segregate, okay, this is apple, this is banana, this is orange, right? वो labels के basis पे उसे उठाएगा। there are unlabeled cases also in machine learning. We do have unlabeled machine learning also, जिसको हम unsupervised machine learning बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं AI, राइट, कि आपने उसको implement कर दिया, तो जो आपने मशीन को सिखाया दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड नाउ टू डू द थिंग्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेटली डिफाइन डेटा साइंस, जो कि हमें इन्फ्रेंसेस, इनसाइट्स और विजुअलाइजेशंस देता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एआई, राइट। आई होप दिस मेक्स इट वेरी क्लियर, और वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ देम इंटरचेंजेबली, राइट। ओके, now let us see what are the various applications of machine learning. अब applications of machine learning में हम यहाँ पे you can see image recognition is there, speech recognition is there. Image recognition तो आपके phones में is there, face lock. Speech recognition, you speak something, you can also lock your phone and you can use your speech to get it done, right? Then traffic prediction is there, right? It can predict the traffic also, राइट। आफ्टर दैट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस इज देयर, जैसे आप एक जगह विजिट कर लो अमेजोन को या फ्लिपकार्ट को, यू विल गेट द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, राइट। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज देयर, ईमेल स्पैम एंड malware filtering, virtual personal assistant. So next application of machine learning is self-driving cars. So if we talk of self-driving cars, you must have heard of self-driving cars from Tesla, and a number of companies are working on self-driving cars, right? तो उसमें in self-driving cars we have deep learning,
राइट. डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है, दे आर बीइंग यूज सो दैट दैट कार एज अ सिस्टम कैन आइडेंटिफाई कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, कहाँ टर्न करना है, राइट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन लाइट, रेड लाइट, एडजस्टिंग द स्पीड, गोइंग टू द डेस्टिनेशन, एवरीथिंग, राइट. So they're just making that machine learn the routes, the different obstacles in the path, कैसे react करना है, everything, right? So this is another example of self-driving cars. After that, we have email spam and malware filtering. Then virtual personal assistant is there. You do have personal assistants in your phones also, right? हमारे पास Cortana है, then Siri is there, Google Assistant is there. Then ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, अगर आप HDFC की वेबसाइट विजिट करते हो तो देयर यू विल फाइंड देयर ओन वर्चुअल असिस्टेंट विच इज ईवा, राइट. एंड ईवा इज वन ऑफ दोज असिस्टेंट्स जो कि मोर देन यू कैन से 10 lakhs ऑफ क्वेरीज हैंडल कर चुके हैं, राइट. सो और जैसे जैसे वो क्वेरीज आगे आगे हैंडल करते रहते हैं, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट. Fine. After that, online fraud detection is there, stock market trading is there. Yes, you can see a number of apps which are predicting you about the stocks, that इस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, वट एवर इट इज, राइट. सो मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशंस है, दैट इज इन अ नंबर ऑफ फील्ड्स. हर फील्ड में यू कैन यूज, इवन इन मेडिकल फील्ड यू कैन यूज इट फॉर डायग्नोसिस. You can predict if person is going to suffer from particular disease in the coming future or not, right, depending upon its medical health currently and past medical records, right. So ये सारी चीज़ें जो है हम machine learning की applications में consider कर सकते हैं. Now what we are going to discuss is we are going to see if you are going to enroll with us for machine learning course, what will you be getting. So we will see that. Now here you can see this is whole of the course curriculum of machine learning. Right, so we will be covering data science, data analytics as well as Python in it, and we will be starting with Python programming from foundation level. You will start the course from here. So learning about Python fundamentals, data types, strings, operators, namespaces, what are the various data structures like lists, tuple sets and dictionaries. All these will be there. Loops, modules, how to use modules, how to import the modules, right, how to install the modules also. Then functions, yes, these are some of the different topics which we will learn in Python. File handling कैसे करते हैं, how is object oriented programming a part of Python, regular expressions, how to send email, and exception handling is part of it. Then GUI programming, then comes machine learning, right. So in machine learning, we will study what are the various types of machine learning, what are the various algorithms we can use in machine learning to make the machine learn on certain data, right. And for example, here you can see, but before that, we will also be working on some concepts of statistics and some concepts of maths also, right. So techniques of machine learning, supervised learning, unsupervised learning, this is what you are going to work on. Then data pre-processing and data mining, which is very important concept before learning machine, before I'm to say continuing with machine learning, you have to be very good at data pre-processing. It is also given as the name of EDA, exploratory data analysis. So ये सब हम करेंगे, anomaly detection, feature extraction, all this will be done. Regression is the first algorithm which we will be learning, in which there are two types of algorithm, linear regression and logistic regression. We will see that. Classification is there, and in classification there are a number of algorithms like nearest neighbor classifiers, k nearest neighbors, SVM is there, naive Bayes is there, decision tree is there, random forest is there. So ये सभी algorithms use होते हैं for classification purpose, ठीक है. अगर हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के डिफरेंस की बात करते हैं तो रिग्रेशन इज समथिंग इन विच यू प्रिडिक्ट कि ये इतना होगा, प्रिडिक्ट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, राइट. क्लासिफिकेशन में यू आर जस्ट गोइंग टू क्लासिफाई अ एंटिटी और एन एंटिटी इनटू दिस. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग यू एन ऑब्जेक्ट, राइट, तो वो आपके लिए होगा इधर इट इज एन एप्पल और नॉट एन एप्पल, और इधर इट इज एन एप्पल और अ orange, something like that. This is what classification is. So इसी को अप्लाई करने के लिए we do have number of algorithms with us, and in unsupervised clustering also we will see what are the various algorithms.
and then one of the projects will be done. So here you can see we do have a number of projects like managing credit card risk, bank loan default classification, superstore analytics. In machine learning you will be working on project of your own choice also. आप अपनी choice का कोई project भी काम कर सकते हो, like Twitter analysis is there, flight price prediction, stock price prediction you can work on. So there are number of things which you can apply and you can learn, right? And in machine learning you will be just making the uh, algorithm, applying the algorithm and predicting out the results, right? This is what the project we can do. Now after this you will be also be getting a number of assignments based upon machine learning, right? वो जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी शो यू कि पाइथन में आपको क्या असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो यू विल बी गेटिंग द पाइथन असाइनमेंट्स लाइक, लेट मी शो यू here in this email. I have shared the assignment with students. Like if I show you here, you can see you will be getting these all assignments on Python, right? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर असाइनमेंट की, you will be getting this assignment so that your concepts of Python can be strengthened, right? Then we do have lists assignment, जो कि आप लिस्ट पे परफॉर्म करोगे, ये भी पाइथन का ही पार्ट है. सो ऑल दीज असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन मेक योर पाइथन स्ट्रांगर, सो दैट जितना स्ट्रांग आपका पाइथन का बेस होगा उतना ही आप आगे जाके उसको मशीन लर्निंग में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? सो मशीन लर्निंग में व्हाट प्रोजेक्ट्स वी विल वर्क इन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू and then you will also be given assistance on how you can work on your resume, right? Because as a machine learning expert you need to highlight those things जो कि employer को आगे जाके point out हो that you stand out of the crowd. ठीक है, आपको कौन से algorithms आते हैं, are you more good on supervised machine learning or you are good on unsupervised machine learning, आपको कौन तरह के algorithms आते हैं. So this is what all will be given to you by me as your technical advisor. I'll be telling you that ये जो चीज़ें हैं ये अगर हम अपने resume में include करेंगे then it will be beneficial for you. So with this we have covered everything, like what machine learning is, definition, how we can differentiate machine learning, deep learning, AI and data science. After that we saw what are the various applications. After that we saw what course content will be covered, projects, assignments. So this is what all you will be getting if you get enrolled with us for machine learning. So this is it. Happy learning. Yeah, so this was the all discussion about projects and course content which you will be getting from us, right? So I'm just here to give you some overview of how machine learning is, how easy it is for us to implement the concepts of machine learning with the help of Python. Python से बहुत easy हो जाता है, right? And it is very easy to code also. Code करने में भी बहुत easy है. You just need to understand the concepts. अब जैसे in this whole program, what is being done, we are just implementing the concept of linear regression. हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. लीनियर रिग्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन में वी जस्ट प्रिडिक्ट अ डिस्क्रीट क्वांटिटी. आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हो. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ ए हाउस विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, तो लीनियर रिग्रेशन में हम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू को लेते हैं और एक डिपेंडेंट वैल्यू को लेते हैं, राइट? सो इस केस में जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू साइज यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस. तो इसमें साइज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है, राइट? साइज इज अ इंडिपेंडेंट और प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज. सो आप इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन करते हो. तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन डिटेल होल ऑफ द कोड, बट येस आई कैन टेल यू दैट हियर वी आर गोइंग टू implement the concept of linear regression, right? So if I run this is Visual Studio with which we are going to execute this. So if I hit here, you will see that we will get an output, right? So we are here getting this chart
plotted line chart, and this is the line which we are plotting here with the, this is the regression line, right? Regression line, right? So we are using the scatter plot along with this line is being used, right? And here we are getting the estimated coefficients, right? So लीनियर लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी पे डिपेंडेंट होता है ये, राइट? और वो यूज होती है इसमें, एंड यू विद द हेल्प ऑफ दैट यू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल. और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इफ वी जस्ट प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू दिस, we can get particular value on a particular point of x. So x के basis पे आपको y की value मिल जाएगी, right? So this is how we are going to implement the different algorithms with the help of Python. So this is just an overview, this is just an example that this is how you will be working on it, right? So this is it. Happy learning.